माय चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल। आज हम देखेंगे प्लम्बिंग में पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंपिंग सिस्टम है। सबसे पहले ये वाटर सप्लाई फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, then this water goes to the overhead tank, pumped by booster pump, and then this water is coming from this overhead tank to these fixture units. You can see here laboratory and splash, distribution, floor trap, shower, and water. This water coming from overhead tank goes to these fixtures, and after these fixtures this water will goes to UST. From the STP there is grey water tank. So from the STP this water will go to this grey water tank, and from the grey water tank it will goes to this WC and urinal. This grey water will goes to WC and urinal. आप देख सकते हैं यहाँ पे this is a laboratory hand spray sink distribution floor trap shower water gate. This is डायरेक्टली वाटर ओवरहेड टैंक से आने के बाद ये फीचर्स में आता है। ये फीचर से वेस्ट वाटर एसटीपी में जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ग्रे वाटर टैंक में जाता है। ग्रे वाटर टैंक से डब्ल्यूसी यूरिनल में जाता है और फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं। दिस ग्रे वाटर इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग पर्पस। After this WC and urinal it goes to this manhole, and from the manhole it goes to this sewage line. So this is the pumping system, how this water is used for this high-rise building for actual practice. I hope you guys learn from this video. Please like and subscribe, and don't share and subscribe my channel. So thank you for watching my video. Thank you very much. Next class we will learn water supply pipe sizing. So cold water, grey water and hot water pipe sizing, hot water supply pipe sizing. We'll see in the next class, next tutorial. So thank you for watching my video. Thank you, bye bye.